नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय नाट्य गति उत्सव जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित है, 9वें दिन की इस तीसरी संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जो इस समय सभागार में मौजूद हैं और हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की शाम एक और विचारोत्तेजक प्रयोगधर्मी प्रस्तुति लेकर हम हाजिर हैं, जो है रिवायरिंग द त्रिभंगा। इसकी संकल्पना और इसका निर्देशन मनदीप रेखी ने किया है। रिवायरिंग द त्रिभंगा ये व्याख्यान प्रदर्शन गति या नृत्य संरचना के अन्वेषण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में त्रिभंग पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। त्रिभंग पारंपरिक भारतीय कला, भारतीय मूर्तिकला और ओडिसी जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में उपयोग की जाने वाली नर्तक के खड़े होने की स्थिति है, जहां शरीर घुटनों पर एक दिशा में झुकता है, दूसरी तरफ से कूल्हों पर और फिर एक और झुकाव कंधे और गर्दन पर। त्रिभंग की इस प्रतिष्ठित छवि के साथ, जिसे अक्सर प्राचीन भारतीय नृत्य निकाय की सर्वोत्कृष्ट छवि के रूप में याद किया जाता है, औपचारिक जुड़ाव के माध्यम से इस कोरियोग्राफिक अन्वेषण का उद्देश्य एक नए नृत्य का निर्माण करना है, जो कह सकते हैं कि विकास की एक निरंतर प्रक्रिया में है। यह व्याख्यान प्रदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है जहां त्रिभंग का रूप हमेशा बनने, लुप्त होने, बदलने और रूपांतरित होने के चक्र में स्थित होता है। क्या राष्ट्र के 75वें जन्मदिन पर उसकी कल्पना इस सतत विकसित होने वाले त्रिभंग के रूप में की जा सकती है? त्रिभंग मानव शरीर में केंद्रीय मध्य की ओर और इसे दूर खींचता है। यह संतुलन में आने और बाहर आने की क्रिया पर निर्भर करता है। क्या त्रिभंग को बिकमिंग या होने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है? क्या हो अगर ये कभी भी अपने तैयार रूप में अमल में नहीं आता? क्या होगा अगर त्रिभंग विकास की एक सतत प्रक्रिया में हो, कभी पहुंच ही नहीं रहा हो, कभी खत्म ही नहीं हुआ हो, कभी स्थिर ही नहीं रहा हो, हमेशा गति में हो और हमेशा असंतुलित हो? क्या त्रिभंग बनने, लुप्त होने, रूपांतरित होने और बदलने के चक्र में स्थित हो सकता है? क्या ये न जानने के सिद्धांत पर पनप सकता है? क्या जानबूझकर भूलने की क्रिया त्रिभंग के सन्निहित अनुभव का हिस्सा बन सकती है? ये सब बातें हमने आपसे इसलिए कही क्योंकि अगले 1 घंटे में ये जो प्रस्तुति आपके सामने होगी, संभव है कि इस तरह की प्रस्तुति आपने पहले कभी नहीं देखी हो और ये आपके लिए बिल्कुल नया अनुभव हो, जो खुद निर्देशक, परिकल्पनाकार के लिए भी आपके लिए एक नया अनुभव प्रस्तावित करने जैसा है। इसकी परिकल्पना और निर्देशन मनदीप रेखी ने किया है। मनदीप रेखी नृत्य के एक अभ्यासकार हैं जिनकी विशेष रुचि ऐसे बिंदु की खोज में है जहां नृत्य रचना, प्रस्तुति, अनुसंधान और नृत्य की शिक्षा का मिलन होता हो। मनदीप रेखी ने 19 साल की उम्र में डांस वर्क्स नई दिल्ली में जैज सीखना शुरू किया और समकालीन नृत्य में उनकी रुचि उन्हें लंदन ले गई। उन्होंने लाबान में डांस थिएटर में बीए ऑनर्स पूरा किया। बाद में 2005 से 2009 के दौरान शोभना जयसिंह डांस कंपनी लंदन के साथ काम करते हुए अनेक स्थानों पर उन्होंने प्रस्तुतियां दी। मनदीप ने कई नृत्य संरचनाएं की हैं। इनमें इनहैबिटेड ज्योमेट्री और क्वीन साइज का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इन प्रस्तुतियों ने देश भर में और कंपनगेल, साउथ बैंक सेंटर और 2009 सिंगापुर इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कई वर्षों के दौरान यात्राएं की हैं। अपने गति डांस फोरम में वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जहां उन्होंने आवासीय कार्यशालाओं, उत्सवों, प्रकाशनों और समर्थन की पहल के रूप में विशेष परियोजनाओं के माध्यम से देश में समकालीन नृत्य के लिए एक सहायक वातावरण विकसित करने की दिशा में काम किया है। आजकल वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एमए प्रदर्शन अभ्यास नृत्य में सहायक प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं। नृत्य में
ये अभ्यास आधारित परास्नातक कार्यक्रम साउथ एशिया में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन है कि आपके अगर फ़ोन किसी भी वजह से ऑन है तो उन्हें म्यूट कर लें, साइलेंट कर लें, ताकि प्रस्तुति में कोई व्यवधान ना आए। तो पेश है रिवायरिंग द त्रिभंगा। Welcome to this work in progress. मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बोलूँगा, थोड़ा हिंदी में भी बोलूँगा. We are in the early stages of making this work, very early stages, and only have some movement material to share with everybody. We've been playing with the iconic image of the Tribhanga, like we just heard. We've been thinking about loosening its nuts and bolts, usko thoda todna, marona, inhabiting it with our own bodies, setting it into motion. This session today is like a rehearsal, a lecture demonstration maybe, because we'll talk a lot, you'll hear a lot of us talking. Perhaps even a performance, you can also look at it as a performance. It's a kind of thinking through of ideas, a place where we can test out ideas through our bodies with you here. We are delighted to have you all join to think with us. So it would be great if you can also respond to this work later on. During the session, we welcome you to shift your viewpoint by changing your seats, walking around in the space, by making space for the dancers. I don't think we expected so many of you to come, so you will see us sort of heading towards you. So I guess if we want to avoid collision, we will both have to figure out how to negotiate with each other. And also very importantly, share your thoughts with us at the end. I'm more comfortable speaking in English, but अगर आप अपने प्रश्न विचार या ख्याल हिंदी, उर्दू, पंजाबी या किसी भी भाषा में रखना चाहते हैं तो प्लीज़ रखें. आप इस प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से देखने के लिए प्लीज़ अपनी सीट चेंज करते रहें, because you will find at some point you're not able to see anything, you may want to shift. You can also stand against the wall if you want a higher point of view. So keep changing your point of view. So this work doesn't have a title yet. There are many half-baked, awkward contenders that are destined to fail. But each of these failed titles throws up a kind of new thought for us. I'm going to share a few of these with you. क्या ये भारतीय नृत्य है? A case of crooked lines. Deflections, deviations, hallucinations of a posture. ये ओडिसी तो डेफिनेटली नहीं है. Making the Tribhanga secular, एक धर्मनिरपेक्ष त्रिभंगा. Rewiring the Tribhanga, queering the Tribhanga. The nation is a dancing body. हमारे शरीरों से ही देश बनता है. A present for India on its 75th birthday. So ये त्रिभंगा क्या है और कहाँ होकर आ रहा है? As a posture, we just heard a little bit of history. It has lived through centuries. It's been a kind of obsession of the Indian sculptor for about 1600 or more years. The figure of the Tribhanga has been used over centuries also to depict
gods, goddesses, apsaras, demons in several religions from the subcontinent. Like all sculptures, documents, buildings, texts, Tribhanga was also interpreted by individuals or groups of individuals and reflected the cultural sensibilities of their time. The figure of the Tribhanga has transformed over centuries as it has passed from one sculptor to another, from one dance to another, from one era to another, from one place to another. How does it continue to evolve now? How does it respond to this particular moment in time? In a country that's reeling under the threat of being reimagined as a Hindu nation, is it possible for us to re-examine our artifacts like the Tribhanga and view them as things that have been made by human beings? Is it possible for us to drop this overdose that we have of reverence around these artifacts? Can we give ourselves the liberty to reimagine the Tribhanga? What if we see the Tribhanga not as a relic from our past, but as a kind of hallucination of our future?
भंगा। भंगा शब्द के कई सारे डिक्शनरी डेफिनेशंस हैं और इसका मतलब बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बहुत सारी भारतीय भाषाओं में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग, ब्रेकिंग डाउन, shattering, tearing down, splitting, dividing. A break, fracture, breach, plucking off, looping, विभाजन या टुकड़े. A portion, bit, fragment, detached portion. Fall, downfall. Decay, destruction. Ruin, breaking up, dispersion, defeat, overthrow, failure, disappointment, frustration. Rejection, a refusal. एक खाई, दरार. Interruption, obstacle, disturbance. Non-performance, suspension. A stop. Taking to flight, a bend, fold. एक लहर, contraction, knitting. The constant decay taking place in the universe. एक लगातार बदलाव. Actually, Bhanga has historically meant different thing across different cultures and times. How can we possibly imagine Tribhanga as an unchanging artifact? Something that is stuck in our imagination of the ancient. अगर गौर करें तो Bhanga has historically meant different things across different cultures and times. फिर हम त्रिभंगा की कल्पना एक ना बदली हुई कलाकृति के रूप में कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसा जो प्राचीन की हमारी कल्पना में फंसा हुआ सा है.
मेरी एक दोस्त है जो उड़ीसी डांसर है। मैंने उन्हें बताया कि मैं, मनदीप, आकांक्षा, हम में से कोई उड़ीसी डांसर नहीं है by our primary training, and that we have got into a process of dancing the Tribanga. This process involves studying, deconstructing, reconstructing, unconstructing, dismantling, expanding, contracting, relishing, repelling, inhaling, exhaling, throwing away, collecting, almost celebrating the Tribhanga. She was very, very furious. She said this is how appropriation of a dance form must look like. She said we must be so under-researched to even attempt it. She said how ill-informed and privileged of us to pull out a fragment from a whole, to decontextualize what we do not know. Now, this fragment from a whole, what about it? Does this mean a fragment by itself, outside of its whole, does not stand a ground of its own? Does this then also mean I, outside of my prescribed identities, communities, and nationhood, do not stand a ground of my own because I am a fragment? Does this mean my excitement to assume a stance, such as this, deprive her, my friend, of her dance? Or are we worried my dance might mingle into others because when it comes to spirits, there are no boundaries, no borders, no codes, and so if you want your dance to be mortal like a body, then you cannot share it. What is dance if it is not shareable? हम उड़ीसी के इतिहास से क्या सीख सकते हैं? Far from being an ancient dance form, Odissi is actually a really recent invention. It was invented in the 1950s by a couple of people who actually made a whole set of really creative choices. इन कलाकारों के ग्रुप ने बहुत से फैसले लिए. पहले तो उन्होंने नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पणा जैसे किताबों से ओडिसी को जोड़ा. म्हारी और गोटिपुआ जैसे फोक फॉर्म से प्रेरणा ली और टेम्पल आर्किटेक्चर को एक इंस्पिरेशन माना. In this whole process of invention, the group took a leaf out of Bharatnatyam's very casteist, elitist reform book. This process of constructing the form as a kind of devotional form for Lord Jagannath was shaped by an intention to codify it, to seek classical status, and to safeguard the purity of its style. These choices actually were directly kind of related to the newly formed nation's pursuit for its ancient Hindu history or identity, its quest for purity, its delusions and hallucinations. अगर हम त्रिभंगा को धर्म और प्राचीन कथाओं से ना जोड़ें, तो उसमें क्या बचता है? Can the Tribhanga be imagined outside of the structures of the existing dance forms like Odissi? What choices can we make today? What are my reference points and desires today? Can playfulness and curiosity become strategies for this reinvention, this constant reinvention? What reference points do I choose today if not the Natya Shastra? Can we look at the Tribhanga perhaps in relation to the Constitution of India that upholds secular and democratic values? What if we were simply to study it as a set of deviations from the vertical median in the human body? Perhaps a bit like an investigation of a particular kind of weight bearing, a way of standing, a way of setting up a vertical. Does it then become a study of lines?
क्या हम त्रिभंगा को एक फॉर्म ना समझ के उसको प्रोसेस की तरह देख सकते हैं? What if it never materializes into its finished form? What if the Tribhanga is in a continuous process of evolution, never arriving, never finishing, never fixed, always in motion and perpetually off balance? क्या त्रिभंगा बनने, गायब होने और इस बदलाव के चक्रव्यूह में स्थित हो सकता है? Can the act of forgetting become part of the embodied experience of the Tribhanga? Can it thrive on the value of not knowing? How do we queer up the Tribhanga? Queer का डिक्शनरी मीनिंग अजीब या विचित्र भी है और एक मीनिंग गड़बड़ करना मैंने देखा इंटरनेट पे. This really resonated with me. To not have the pressure to be correct or right. गड़बड़ करना. The whole point of being queer is that we get to make up our own rules. Not only can we blur the lines, but we're also kind of able to erase them completely. अगर हम त्रिभंगा को विचित्रता की दिशा से देखें, तो क्या नए रास्ते खुल सकते हैं? Does it allow us to embrace the process of blurring, erasing, transforming? What does the Tribhanga in turn bring to the queer? Does it give us the means to enjoy this process of rewiring? Rewiring something that is very familiar to us by making it unfamiliar again.
Thank you for watching so patiently. I just wanted to introduce the team. Akanksha Kumari, Meghna Bhardwaj, and a super helpful team that has really allowed us to just settle into the space. Manju Sharma, Jasmine Yadav, Pallavi Verma, Lalit Khatana, and of course the entire team of SNA who've really made it really lovely for us to be here.
So we have about 15 minutes to hear responses from you. Please do come to the mic. I know it's a bit formal, but it would have been nice to have you speak from where you're sitting, but you may have to come to the mic only because it's getting recorded. So it may be nice for us to get to hear your voice in the camera. But also, you don't be compelled to give us long feedback. It can be a couple of words, it can be questions, it can be anything that you'd like to place there for us, a concern, any of those things. Feedback, all of it is welcome. So we have about 10 to 15 minutes for that. Perfect. Hi. Hello. First of all, thank you for such a wonderful performance. One basic question which I have is, why this setup? For many reasons. This is something that I have been concerned with for a couple of works now. Is मैं English में बात कर सकता हूँ ना? That the stage setup, usually what that does is that it creates a separation. Performer वहाँ, हम अंधेरे में बैठे हैं, they are lit. Someone's higher, someone is lower. So there's a kind of equation that's set up, which is already, जिसमें hierarchy already, power already है. अब कौन ज़्यादा powerful है मालूम नहीं, because very often audience मुझे ज़्यादा powerful लगती है, because you can really be absent, you can be on your phone, and we don't even know. But at the same time, the performer also gets the privilege to be seen, to be able to speak, to be heard. I've been thinking of ways to disrupt that, ways in which frontality can be challenged, कि मतलब सामने से ही नहीं dance देखते हमेशा. Maybe we can see it from different angles. Also, I think there is something about dance which is really special. The bodies heat up as the performance goes on, and you begin to sweat, you begin to get tired, you begin to sort of get out of breath, and I find that is a very, very, very useful affect that one misses out on. In fact, stage pe to we're trying to hide it very often. So how do we make that visible? So there are many concerns, but it's been something that I've been working on for a bit to try out differences. So it's really a trial today. And जब हमने देखा कि इतने सारे लोग आए, तो part of me was like, यहाँ कैसे dance करेंगे? But that's also the challenge of setting up something which can be potentially uncomfortable also. Hello. अच्छा, वो next. Yeah. So first of all, it's a very how can I say it in the words? It's not a good bad. I think it's a very new experience. I have two questions. First is, how do you perceive vibrations while making or sustaining any posture or movement? And do you feel we have certain preference for some movements for no reasons, like we'd like to do something like this or something? So vibration, I think it's, हम बहुत डायरेक्टेडली भी काम करते हैं वाइब्रेशन के साथ, कि जो बॉडी में वाइब्रेशन है उसको कैसे एम्पलीफाई कर सकें. कभी कभी बैलेंस में you're also trying to see whether you can erase it. And very often now, more and more, as I get older, I feel like the tremble or the shaking, if there is any, is also equally available to watch. है ना, उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है? विंग्स में चीज़ें क्यों डालने की ज़रूरत है? बस ये है, अगर ये एजिंग बॉडी थोड़ी सी हिल रही है या कुछ हिल रहा है किसी का, तो वो that's part of the performance. हाँ, so make that part of the performance. So जैसे हमें anxiety बहुत ज़्यादा, Manju, who's been rehearsal directing us last couple of days, has been saying कि contemporary dancers में ना आंखें ऐसे होती है, ऐसे हो जाती है एकदम, कि मतलब कि जैसे कि कोई है ही नहीं यहाँ पे. So we've been also trying to work कि मतलब ये आंखों का जो discomfort होता है, उसको कैसे हटाया जाए? Can we actually look at people when we're dancing with them, in front of them? That kind of discomfort. आपका second question मैं भूल गया. Do we have a certain preferences for a certain movement? See, I'm sure मेरी अपनी preferences तो हैं, पर hopefully as we go ahead with this structure,
वो हमारी जो खुद की प्रेफरेंसेस हैं उसको भी हम थोड़ा डिस्टर्ब कर सकें कि जो हमारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है हम वो भी कर सकें या त्रिभंगा को उस दिशा में भी लेके जाएं. But yeah, early on, this is where we're at. Some things are uncomfortable for me, but they're not uncomfortable for the others. And sometimes things are very easy for them, it's uncomfortable for me. So it's a shared kind of collection of things that are comfortable and not comfortable. First of all, your performance was amazing. And I'm performance artist too. As I'm seeing your performance, how you're using your space and spontaneity and transformation in between the peoples, that was really great. First of all this performance I see, I get inspiration, you guys, and I was trying to adapting by my camera, like your movements, your hand movements, your twisting hands. That was a really glory of your performance. That was I was trying to adapting, and sorry for interrupt. Most of the people get so I'm really sorry, but this was really good performance. Actually, usually cameras is something that one sort of really gets irritated by in a performance, but somehow because the setup is like this, it just became another pair of eyes. Hana? So it became really part of the performance. So I really actually thought that announcement of the phone ko bahar mat nikalna, one doesn't have to do. It's pretty nice actually when more eyes come up. Haan, exactly. Thank you for a very good performance, Mandeep. My question, or maybe just a spontaneous response to the third intervention that you made about breaking down, breaking down the structures, just seeing things in lines, not going back to the ancient, not going back to the text. How is it perceived today? In that sense, do you believe that it's only the prerogative of the artist to kind of challenge and break down? Because is any other discipline, if it were to challenge its very notions, say for history, say for we've been suffering, economics, if they were to break down and they were to challenge the discipline and the processes that have gone into making it, what would then happen? Well, actually, I feel like every field does do that. It breaks ground. Academia breaks ground. New things, new philosophies come and overwrite the ones that have happened before, have contradicted things that have happened before. Science, new inventions come, things are, no longer valid anymore. So I feel like all of that happens already, but actually I think of it as the opposite. Sometimes the arts is the slowest in responding. Well, at least dance in a setup like our country, where things can get locked down a little bit by because they are celebrated as ancient, unko chhuna nahi hai. I feel like the arts are a bit slower actually. Economics probably has more of a free will in that sense. But I find that the arts are kind of shackled a little bit more. So yeah, that's my experience, but I'm pretty sure that isn't everyone's experience. Hello? But yeah, one thing it did strike me as I was listening to you was, in the same way, my dream is if the politics of a country can also evolve, and new grounds are crossed, and there are new ways of engaging with politics. If those could also, I mean, that's really. Yeah. Yeah, it's shifted. Yeah. Exactly. But I guess what's key, and also maybe one of the reasons why I would probably want to keep this performance as a kind of work in progress, that it never settles into something solidified, is that this process of questioning can remain alive in a work. So it doesn't get solidified, it doesn't get to a point where it doesn't question itself.
that sense of questioning, can it remain alive even in an artwork, is something that I would really desire, because then that's what we desire also with politics and other fields. So can we also keep it alive in our own fields? Yeah. Thanks. नमस्कार सर। पहले तो मैंने प्ले देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका ये दूसरा मैंने एक NSD में भी देखा था जब ललित सर कर रहे थे। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन ये लगा मुझे कि रिपीटेशन आपका, इसमें भी मैंने रिपीटेशन बार बार देखा, तो बीच में एक ऐसा समय आता है कि आप थोड़े से एंजाइटी होने लग जाती है 20-25 मिनट के बाद। तो मैंने इस बार भी महसूस किया। फिर उसके बाद एंजाइटी होने के बाद कि मैं निकलूँ ना निकलूँ, क्योंकि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। ललित सर ने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया अभी तक। तो वो एंजाइटी जहाँ पे आप प्रोवोक कर रहे हो दर्शक को कि वो निकले ना निकले, और लास्ट में जब एक रिदम पकड़ लेता है तो वहाँ कनेक्शन जो मिलता है वो है, मुझे मज़ा वहाँ आता है कि मैं निकला नहीं लेकिन फिर मज़ा आ गया आखिरी में। दूसरी चीज़, मेरी एक फ्रेंड है भरतनाट्यम से है, आपका की जो टेक्स्ट में कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि क्या हम तोड़ सकते हैं जो प्रवृत्तियाँ या जो सिद्धांत होते आ रहे हैं। तो मैं वहाँ संकोच कर गया, थोड़ा सा डरा कि ये व्यक्ति तोड़ने की बात कर रहा है। जब वो महिला मुझसे बात करती हैं तो वो कहती हैं कि अगर मैंने कुछ अलग किया या करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं मुझे अपने माहौल से निकाल दिया जाएगा या कहा जाएगा कि ये गलत दिशा में जा रही है। तो फिर आपने एक शब्द यूज़ किया, अगर हम ऐसा कर सकें तो, वहाँ आप खिल गए, है ना। तो आप खेल गए वहाँ पर। तो मैंने कहा कि अगर, तो फिर तो अगर में तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आपने ना उनको निराश किया ना हमको निराश किया, तो वो मुझे टेक्स्ट वाइज बिल्कुल क्लियर समझ में आया। तीसरा मुझे ये लगा कि इस परफॉर्मेंस में जब आपके पास टेक्स्ट नहीं होता, जब आपका जो अभिनेता है, जो किरदार कर रहा है, वो बॉडी से एक रिपीटेशन को जन्म दे रहा है, तो आप कैसे तय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि आप सही गलत से तो वैसे हट के ही जा रहे हैं, लेकिन आप तय कैसे करते हैं कि ये कला में निपुण हो पाएगा, ये इस दिशा में जा पाएगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ या कोई और भी कर सकता है। एक जनरल की अभी मैं देख रहा था, मुझे बोलना नहीं चाहिए, जैसे देखते देखते एक व्यक्ति कुछ देख रहे थे, कुछ और ही देख रहे थे, तो मैंने सोचा क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ उसे देखते हुए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो, कि वो ये चाहा गया है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसमें वो कलात्मक शैली क्या है, ये मेरा सवाल है। थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज़ पकड़ना चाहता हूँ, बिकॉज हम उसके बारे में बहुत एक्चुअली बात करते हैं कि काफ़ी टाइम जब मैं स्टूडियो में, हम मेघना के साथ काफ़ी बातें होती हैं कि कभी कभी हम कोई रूल बना देते हैं कि ये नहीं करना, हाँ, या एक्चुअली ऑपोजिट कि ये कोई रूल नहीं है, जो करना करना, और उसके बाद एग्जैक्ट ऑपोजिट एक इंस्ट्रक्शन आती है कि नहीं नहीं ये मत करना। देन मेघना से, पर आपने तो बोला कोई रूल्स नहीं है, तो आप ये रूल्स कहाँ से आ गए? सो इट्स, आई फाइंड दैट नेगोशिएशन ऑफ के रूल बन रहे हैं और टूट भी रहे हैं, और फिर और नए रूल्स बन रहे हैं और वो भी टूट रहे हैं, वो दैट आई फाइंड एज अ काइंड ऑफ एक्साइटिंग वे टू सेट अप अ वर्क। किसी दिन कुछ चीज़ नहीं ठीक लगती, एंड आई थिंक ओवर द इयर्स नाउ आई एम ओके, becoming more okay with some things not working out, because पूरे अभी तक जितना भी मैंने काम बनाया ना, at least शुरुआत वाला, that was really set. It was really like कि जो मतलब जितनी precision के साथ काम बन सकता है वो ही repeat होगा हर बार। अब मुझे वो एक्चुअली थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगने लगा है, क्योंकि आई फील लाइक वो काम फिर उसी प्रॉब्लम में जाता है जो क्लासिकल डांस का प्रॉब्लम हो जाता है, that it doesn't change itself. So over the years मुझे ये थोड़ा exciting लगने लगा है कि थोड़ा suspend हो जाए काम और थोड़ा change होता रहे as it gets performed. Yeah. अच्छा, please jump in and say things, हाँ? मेरा एक सवाल है, पहले तो आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू कि बहुत ही करेजियस और एक ब्रेव परफॉर्मेंस थी,
क्योंकि यहाँ पर मैं देखती हूँ कि लोग ना क्लासिक से ही बाहर नहीं आ पाते। मैं जितनी बार देखने जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मोहन राकेश का कोई नाटक तो नहीं हो रहा होगा, ये विजय तेंदुलकर। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वही बात है कि हम क्या कुछ नया कर पाएंगे। तो एक आपने एक नई डायमेंशन उसको दी है, यूथ को। इतने सारे लोग हैं, मैं खुद एक थिएटर ग्रुप में चलाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन है कि वाई त्रिभंगा, और दूसरा कि कोई कॉस्ट्यूम क्यों नहीं रखा आपने? बहुत कैजुअल था, और मुझे ऐसा लगा कि कई बार ना विजुअल्स में जब, क्योंकि हम इतने लोगों के बीच में आप हैं, तो वो मिक्स हो रहे थे। ये बस एक छोटा सा मुझे लगा। मैं आपका दूसरा क्वेश्चन पहले वो करूँगा, उसके रिस्पॉन्ड करूँगा। हमारा कॉस्ट्यूम ना अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है, काम की तरह ही। आज हमने थोड़े से कपड़े आए, उसमें से चूज़ किए। आई हैव अ फीलिंग, आई एम हैप्पी फॉर इट टू रिमेन दैट वे, क्योंकि अगर डांस सेटल नहीं हो रहा तो कॉस्ट्यूम भी मुझे लगता है सेटल नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वो एक चीज़ फिर एकदम अड़ जाएगी। सो इफ द क्वेश्चन इज टू नॉट मेक थिंग्स स्टैटिक, सीट्स भी शिफ्ट हो रही हैं, डांस भी त्रिभंगा के थ्रू जाते हुए कभी कंप्लीट नहीं होता, तो फिर कॉस्ट्यूम मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट पे प्रोसेस के कि कॉस्ट्यूम भी सेटल नहीं होना चाहिए। सो अभी वे स्टिल वर्किंग थ्रू इट, मे बी न्यू आइडियाज कैन कम, perhaps things come on, come off, new things come, you know, it can keep changing perhaps. आपका पहला क्वेश्चन मुझे जल्दी से बताना पड़ेगा आपको। हाँ, वाई त्रिभंगा? Many reasons. एक तो मुझे as a dance artist, I really have been fascinated with just the play of lines that the Tribhanga has. Just really as a form, I find it very exciting. कि मतलब एक इस तरफ को पुल हो रहा है, एक उस तरफ को पुल हो रहा है, एक तीसरी तरफ को पुल हो रहा है. There's a kind of tension there which I find very exciting. So because I over the years have obsessed with lines generally, like I like playing with lines. So for me, Tribhanga became really exciting as a kind of physical proposition. Secondly, why I think for me Tribhanga was exciting was also because it's one of the most ancient kind of symbols of Indian history. Some of the oldest, what do you call it, statues or sculptures that we have the Tribhanga in them. You know, so dating so I think the dancing girl of Mohenjo-daro is about 3,500 years old, which still exists, I think, in the National Museum. So for me to play with something that's really that old and ancient and see whether even that can begin to shift and change, because that, like we said in the text, it's not been settled into one thing in history anyway. So can this become a kind of example with which we can attend to artifacts? Then all artifacts का ये sort of एक example बन जाता है कि अगर बहुत सारे ना त्रिभंगा के बहुत सारे पोजेस उन्होंने पेंट कर रखे हैं बाटिक में, ऑयल में। तो हम बचपन में ना उनके आगे खड़े होकर वो पोजेस हम बनाते रहते थे। तो आई कुड एक्चुअली रिलेट टू इट। अगली बार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ट्राई इन्वॉल्व ऑडियंस आल्सो इन लास्ट 5 minutes. Yeah, we've been thinking of ways of doing that actually. Yeah. So yeah, because I find कि ऐसे प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करने के लिए then the audience can't really not be part of it in some way. You know, so वो देखना पड़ेगा हमें, how do we construct that and how do we make that happen where everyone's comfortable with it. Last question के लिए माइक मैंने वापस ले लिया अपने पास और मैं ही पूछ लेता हूँ अपना सवाल। मतलब ऑडियंस की भूमिका में मेरा सवाल, क्या हम इस नतीजे पर, यानी आप इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं या रेलेवेंट नहीं हैं और उनको रिडिकूल किया जाना चाहिए और रिडिकूल करते हुए एक डांसलेसनेस को प्रपोज किया जाना चाहिए? एक्चुअली मैं जो प्रपोज करना चाहता हूँ कि ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं वो इतने पुराने नहीं हैं जितने हम समझते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि ओडिसी एक्चुअली 1950s का ही इन्वेंशन है। सो भरतनाट्यम अर्ली 20th सेंचुरी में पूरा बदल दिया गया। सो ये एक्चुअली
कहीं फंसे हुए नहीं हैं, बट जो इनकी मोमेंट्स ऑफ री इन्वेंशन थी वो बहुत ही एक्चुअली क्रिएटिव प्रोसेस थे. उसके बाद जाके वो अटक गए, बिकॉज दे स्टार्ट सर्विंग अ काइंड ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, है ना. when they become part of the state's agenda to preserve culture, then they become stuck. So the idea is not to throw them away. That's my idea, is not to throw them away, but actually to pull out from them and make them creative spaces again, because they are actually creative spaces and they've always been creative spaces. So how do you return to them as creative spaces rather than sort of symbols of our ancient history, when it is not even true? They're really recent inventions, so they're not so ancient. Thank you. नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, so but last, very last. Yeah. I think they have to I'm wrap not up. questioning, I'm just responding with some words. I think that will be. I think this few minutes or an hour or half an hour what I have spent here, I felt rereading the idea of exhibition or exhibitionism. Even I think Juhiji also aptly said, I think there was no need of costume. Smelling sensitivity, sculpting the space, reaching and vibrating the coldness of spectatorship. So these are the words which came as a response to your team's performance. Thank you. Thank you. तो आप जवाब दे रहे हैं? कोई सवाल है? नहीं, सवाल नहीं है. अच्छा. तो हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छी विचारोत्तेजक चर्चा शुरू हुई है. इसको विराम देने के लिए मैं सुमन जी को कहूँगा कि वो आएँ और शायद इस बारे में भी कहें, जो मुझे भी लगा कुछ देखते हुए, कि एक दर्शक के रूप में मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि डांस आखिर शुरू कब होगा. क्या हम एक इतना डांसलेस समाज बना चुके हैं जहां हमें वो बेचैनी परफॉर्मर और डायरेक्टर पेश करना चाहता है कि हम एक ऐसे समाज में रहने लगे हैं, वो एक डांसलेस और एक बेतुका समाज हो गया है. अगर ये पर्पस था तो मैं कहूँगा कि ये इस प्रस्तुति की बहुत ही कामयाबी है. लेकिन सुमन जी इसमें कुछ कहना चाहेंगे? ये तो वही बात है जो कर रहे थे कि हम एरिना में सबको ला रहे हैं, चाहे वो एक्ट कर रहा हो ना कर रहा हो, वो देखा जा रहा है और उसे समझा भी जा रहा है और उसकी उपस्थिति का कुछ असर भी है, उसके हिलने का भी कोई असर पड़ता है. चीज़ें शिफ्ट होती हैं, बदलती रहती हैं. हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि कई बार हम तय कर चुके होते हैं, या भूमिका यहाँ भी तय थी दर्शक की कि उसे उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करना है, नहीं तो सिनेरियो कुछ और हो जाता कि एक परफॉर्मर यहाँ डिफाइंड परफॉर्मर थे, एक बेचारा कैमरा वाला आ गया उसे उत्साह में आ गया, लेकिन वो लग रहा था जैसे कि पार्टिसिपेंट है. और चलिए, दरअसल हम रहते तो ऐसे ही हैं, हमारा समाज और हमारी चीज़ें, हम इस पूरे ग्लोब में मनुष्य को देखें तो हम ऐसे ही हैं. ये अलग बात है कि हमने उसको उत्सव के कारण, सेलिब्रेशन के कारण, अपने जो मान्यताएं हैं या अपनी परंपराओं को कहें, उसके कारण सबने अपने अपने डिविजन्स बना लिए, अपने अपने चीज़ें तय कर ली हैं. इस तय करने से बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी असुविधाएं हैं, दोनों ही चीज़ें हैं. कहीं हम रुक जा रहे हैं, कहीं हमें सुविधा होती है कि हाँ यार सब कुछ है, ये ठीक है, हम सुविधाजनक स्थिति में हैं. तो कला तो यही काम करती है कि आपको असुविधा की तरफ धकेलती है, सबसे पहले खुद जाती है. ये हिम्मत तो कलाकार ही करता है कि वो उस दायरे में लगातार घुसता है जहाँ विवाद है, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जो है आप टूट रहे हैं. और ये त्रिभंगी क्या बहुत बहुभंगी है हम सब तो बहुत भंगी है, लेकिन त्रिभंगी जो है एक हमने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है या उसको समझा है
कि ये अष्टावक्र भी हुआ करते थे हमारे इसमें, बहुत विद्वान हुआ करते थे, लेकिन वो अष्टावक्र क्या है, विकृति की निशानी हो जाती है, शारीरिक विकृति की, और शरीर उस विकृति में जा ही नहीं पाता, जा नहीं सकता। तो हमारे लेकिन हैं ऐसे लोग भी हैं, तो हमें कई तरह से हमें इसको देखना होगा, और इसको पॉलिटिकल नज़रिए से भी देख सकते हैं आप, कल्चरल इससे भी देख सकते हैं, सोशल नज़रिए से भी देख सकते हैं। अब जा कर के ये दोबारा देखने की ज़रूरत है कि हम इस परफॉर्मेंस को यूं ही नहीं सुलझा सकते, एक बातचीत में नहीं सुलझा सकते, इसको ऐसी चीज़ों को फिर सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और आप जिस नज़रिए से देखेंगे वो दिखेगा, तो आपको उस नज़रिए से ये इसके कई बहुअर्थ दिखेंगे। और शायद कलाएं यही काम करती हैं कि आप जहाँ स्थिर होते हैं तो वो उसको तोड़ने का काम करती हैं आप, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इतनी, या कॉमर्स जो है, मार्केट जो है, या हमारे नेता जो हैं पॉलिटिकल सिनेरियो को तोड़ने की, वो दूसरे तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी भंगिमाएं अलग होती हैं और वो भंगिमाओं में कलाकार नहीं पड़ता, बल्कि वो इंसान के अंदर ही जो टूटन है उसको समझने की कोशिश करता है, और तरह तरह की भाव भंगिमाएं बनाता है, तोड़ता है आपकी। और यहाँ भी था कि आपको लगातार प्रोवोक भी किया जा रहा था, जो हम कहते हैं कि आर्ट इज़ ए मीडियम ऑफ प्रोवोकेशन, तो वो आइडियाज़ के लेवल पर भी, और जब आइडियाज़ की बात हो चुकी थी, जो आधार रख दिया गया था, उस आधार के बाद एक्शंस के लेवल पर भी, मूवमेंट के लेवल पर भी, पैटर्न्स के लेवल पर भी, और कई सारे रिदम अपने आप वो साथ साथ बढ़ भी रहे थे, बॉडी के अपने रिदम्स बढ़ रहे थे, वो लगातार बढ़ता जा रहा था, उनके अंदर बढ़ता जा रहा था, और ऑडियंस भी अपने समय के साथ जो है उनकी टिक टिक भी घड़ी जो चलने लगती है, तो वो भी उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। तो ये सारा कुछ जो है काम तो आर्ट का ही हो रहा था, लेकिन ये अलग ढंग से, अलग तरह से, आपके सेट पैटर्न से अलग, आप जो सोचते हैं उससे अलग, और जो सामने की चुनौती है, दरअसल बात वो वहाँ भी यही कह रहे हैं कि ये सोचा नहीं था हमने, तो हमने सोचा नहीं था, बल्कि आर्ट अपना स्पेस क्रिएट भी करता है, और हमें ये लगातार जो है आदत डालनी पड़ती है कि अल्टीमेटली आर्ट हैज़ टू एडजस्ट विद द स्पेस, उसको करना पड़ता है, और अपनी बात भी कहनी है, अपनी सारी चीज़ें करनी हैं। तो ये हम जहाँ भूलते हैं तो वहाँ इस तरह कई सारे प्रयोग हमें करने पड़ते हैं, और ये ज़रूरी हैं, कई चीज़ें हम आर्ट के लिए कर रहे हैं, और ये सारा आयोजन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दर्शक को अच्छा लगे, ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये बहुत खुल के बात मैं कह रहा हूँ, हम दर्शक के लिए नहीं कर रहे हैं। दर्शक एक कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है इस स्पेस में, उसे कुछ मिल रहा है, ये अच्छी बात है, नहीं भी मिल रहा हो तो हमें इसकी उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि हम आर्टिस्ट के लिए कर रहे हैं कि वो अपने आर्ट को समझें, क्योंकि वो उनके अंदर जो भंगिमाएं बनी हुई हैं, स्थिर भंगिमाएं बनी हुई हैं, जो चट्टान की तरह जो बना लेते हैं हम, वो स्थिरता जो है, ठोस नियम बनाए हुए हैं, कायदे कानून बनाए हुए हैं, तो उससे थोड़ा निकलें और सीखें ज़रूर। सीखने के लिए मैं ठीक है कि इतने सारे हमारे पास क्लासिकल मीडियम जिसको कहा जा रहा है, हमने इधर ही स्वीकारा है कि वो क्लासिकल मीडियम है, नहीं तो सारे फोक से आए हुए चीज़ें हैं, फोक से ट्रेडिशनल हुए, ट्रेडिशनल से क्लासिकल हुए, और क्लासिकल से लगातार फोक होने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सारे मीडियम्स आप देखिए तो उनमें लगातार ये टेंडेंसी है, जब वो बड़ा आर्टिस्ट होता है तो वो फोक जैसा लगने लगता है, उतना ही लोकप्रिय, उतना ही बेपरवाह, उतना ही लापरवाह, वो चिंता ही नहीं करता कि उसके क्लासिकल उस एरिना में है या नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ को हासिल कर चुका होता है, उसके आगे बढ़ता है, तो वापस उसकी चीज़ उसको देने की कोशिश जो होती है। तो ये एक बड़ा लंबा डिबेट है और चलता रहेगा, ये अभी इस एक प्रस्तुति से हल नहीं होने वाला, ना होना है ना दावा है, ऐसा कोई दावा भी नहीं है कि हम अभी हल कर दे रहे हैं, लेकिन ये सारी दुनिया प्रोसेस में है, और प्रोसेस में रहना ही अच्छी बात है। कला जो है निर्मिति के लिए जो है एक क्रिएशन का प्रोसेस हमेशा बनाती है, कभी कभी कला के उस लेवल पर पहुंच पाती है जहाँ वो पत्थर की तरह उकेर दी जाती है, जहाँ उसको छाप दिया जाता है कि अब ये हो गया,
तो वो स्टेज कभी कभी आता है ज़िंदगी में, हम सब के कभी आएगा, नहीं आएगा, किसी की ज़िंदगी में कभी नहीं आता है, तो हो सकता है, लेकिन प्रोसेस हमेशा होता रहना चाहिए। हम और इसीलिए इसकी पूरी संकल्पना भी थी। और इस बात को बच्चे यदि समझ पा रहे हों, तरह तरह की चीज़ों से हम आपको गुजार रहे हैं, ये समकालीन, आप अभी के वक्त में रहें, अभी जो कुछ हो रहा है उसको समझें, सोचें, और एक कलात्मक इंटरवेंशन करने के लिए आपको अपनी कला के ज़रिए जो कुछ करना है, जोड़ना है इस समाज के लिए, संस्कृति के लिए, ये काम आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। और आप जानते हैं कि सुमन जी, जिनको अभी आप सुन रहे थे, वो संगीत नाटक अकादमी के डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा हैं। इसके अलावा वो प्रशासन भी संभाल रहे हैं और कथक केंद्र के निदेशक भी हैं। और ये उनकी और उनके साथियों की सूझबूझ और दूरदृष्टि ही है कि इस पैंडेमिक के दौर में हम इस तरह के एक लंबे 10 दिन, और ना सिर्फ ये 10 दिन का, बल्कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कुछ और व्यवस्थित कार्यक्रमों की एक रूपरेखा उनके पास है, जो आने वाले दिनों में आप उसके साक्षी बनेंगे। तो इस तरह के अनुभव हमारे सामने प्रस्तावित ही हो पा रहे हैं। इस तरह के खुद कलाकर्मी और रंगकर्मी होने के नाते, और उस तरह की दृष्टि कला के प्रति होने के नाते, हम इन सब चीज़ों के साझीदार हो पा रहे हैं, साक्षी बन पा रहे हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि ख़ास तौर पर इस पैंडेमिक के दौर में मनदीप की इस तरह की किसी प्रायोगिक एक प्रस्तुति के लिए हमारे पास कोई जगह होती या हम इस अनुभव के हिस्सेदार बन पाते। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं सुमन जी के, आप सभी जो हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए जुड़े हैं इस समय लाइव। आप कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मनदीप आपका, आपकी टीम का, आप सभी जो यहाँ आए, आप सभी का बहुत आभार। अच्छा, ठीक है। इस रिवायरिंग द त्रिभंगा में मंच पर थी आकांक्षा कुमारी, आकांक्षा कुमारी प्लीज, मेघना भारद्वाज, और मनदीप रेखी, जो कि इसके निर्देशक और परिकल्पना करते हैं। संगीत स्टीव रीच का था। तो एक बार फिर से आप सभी का यहाँ आने के लिए, अभी कल 10वां और अंतिम दिन होगा। आज की प्रस्तुतियों को यहीं पर विराम देते हैं। कल आपसे फिर भेंट होगी सुबह 10:30 बजे, और उसी तरह 2:30 बजे विक्रम मोहन की वर्कशॉप में आप होंगे। शाम को 6:30 बजे एक और नई प्रस्तुति होगी। तब तक के लिए विराम दीजिए। नमस्कार।